So all of you guys know that computers are basically circuits and circuits of different equations. So Siddharth, you remember we had learnt in electronics when we Yep. when we were in PUC, where Yep. one plus one you can actually make a light out of it using some transistors by Right. Right. controlling the flow of current, and you can help it solve equations. Yep. सो कंप्यूटर में क्या हो रहा है, जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, इट्स बॉइल्ड डाउन टू 0 and 1, एंड दैट 0 and 1 इज पुश्ड इनटू ट्रांजिस्टर्स. Right. ठीक है. इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स में these all these transistors put together with multiple layers and all form a circuit, and Okay. multiple this circuit is basically your CPU. Okay. Okay. Now these processors or these chips are laid out on a wafer thin 3 nanometer थिकनेस वाला सिलिकॉन वेफर. और जो Okay. सर्क्यूट्स हम बात करते हैं ना, जो अपन लोग डायोड सबसे करते थे, हाँ. वो डायोड का सर्क्यूट लिटरली वो सिलिकॉन के लेयर में 3 नैनोमीटर थिकनेस में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वहां पे कॉन्फ़िगर होता है. ओके. तो उस अगर बिलियंस करना है तो 28 नैनोमीटर्स सो बेटर आई एम होगा ना कमिंग टू 3 दैट. नैनो. आई एम कमिंग टू दैट. ओके. नाउ you understood what a chip is, right? It's basically these billions and billions of these circuits laid It's a out. collection of circuits laid out on a silicon wafer. Exactly. Now, in electronics, this is just one of the explanation. There's a lot of ways for it, but one of the reasons why you want thinner. Uh, Number one, this particular measurement, 3 nanometer, 28 nanometer, it represents the thickness or the distance between transistor nodes or layers. Okay. Larger the thickness, hotter the chip becomes, harder it becomes to manage. Thickness between two layers of circuits. Transistor nodes. Yes, yes, yes. Okay. So it's always better to have lower and lower and smaller thicknesses. Plus, you have one wafer. So samajh, this is the size of your CPU. This is a small post-it, right? This is the size of your CPU. So if you have a 28 nanometer chip, Okay. you divide 28 by 3. 7. 10, 9. 10, almost 10. Yeah. So you have 10 times less transistors on the same CPU if you use a 28 nanometer chip versus a 3 nanometer chip. Oh, okay. You understood? Right, right, right. Because the number of transistors you can have reduces drastically, right? हाँ. So अभी जो ये समझो बना रहे हैं प्रोसेसर, वो किस में लगता है 28 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर? कैलकुलेटर में लगते हैं क्या? वॉच में कैलकुलेटर थोड़ा ज्यादा कम हो गया, थोड़े मेडिकल डिवाइसेस में, वॉच में, शायद इन सम एंट्री लेवल म्यूजिक इनका अभी कंसोल्स भी व्हाट आई एम आस्किंग इज मॉडर्न वर्ल्ड में एप्लीकेशंस है क्या 28 नैनोमीटर के आज भी? है. सो इसमें क्या हुआ है, why there is an opportunity and why you are seeing some investment coming in now, or why there's even a chance here, is TSMC in सबसे उठ गया है. अच्छा, they've exited. They've been there. दे आर लाइक हमको हो ये गया. बकचोदी सपोर्ट करना ही नहीं है, ठीक है. हाँ, they want the industry to move forward. डूड इंडस्ट्री इज मूव फॉरवर्ड. उनके पास उनका पूरा फाउंड्री का बुकिंग हो गया नेक्स्ट 10 years के लिए. Right, right. And they have booked it for what? They have not booked it for the entry level processors. Fucking I don't want to make a calculator का chip. कितना देगा तू calculator chip के लिए पैसा? Exactly. 100-200 रुपए देगा. Whereas क्यों चाहिए? नहीं, कौन or सा है even ऐसा? music console in a car, that also doesn't require that much processing. हाँ. But then an M1 Mac Mini, for the same wafer size, for the same amount of raw material, for the same amount of time it takes to produce, they get 8, 10, 15, 20 times the value. So Right. TSMC has moved forward. And there is a gap here, temporarily, जहाँ पे जो थोड़े entry level workloads है, कार हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, for these you still have scope for a higher nanometer thickness के wafers. Okay. क्योंकि TSMC को घंटा सपोर्ट नहीं करना है, सैमसंग को भी घंटा सपोर्ट नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है. पुरानी चीज किसको बेचना है? Why would you want to invest money in supporting something which is getting outdated soon? Also, and there is that law ना, किसका law है वो कि Murphy's law.